Assalamu alaikum class. Hope you all will be fine and healthy. So we are here today for our today's online lecture, and our topic of today's lecture is unit number 2, cell to organism. This chapter is going to be very easy, but at the same time it is very important to understand the origin of any living organism. स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा एक बिल्डिंग को बने हुए, ठीक है. बीइंग अ ह्यूमन माइंड वी ऑलवेज रियलाइज दैट हाउ द थिंग्स आर फॉर्म्ड. सो थिंग्स, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बन जाती, उसको हमेशा स्टार्ट होने के लिए इट रिक्वायर्स इनिशियल स्टेज टू बिल्ड इन अ प्रॉपर फॉर्म. एक बिल्डिंग जो एक प्रॉपर फॉर्म में आती है ना, वो वैसे ही नहीं आ जाती, उससे एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट होना पड़ता है. सो व्हाट इज़ दैट इनिशियल स्टेज? दैट इज इट्स बिल्डिंग ब्लॉक, इट्स इज ब्रिक. ठीक है, एक ब्रिक से आगे एक बिल्डिंग बनती है. सो दैट ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी बिल्डिंग. ओके, गॉट इट. इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है, हाउ इज दिस फॉर्म? एक प्रॉपर फॉर्म में एक बॉडी आ जाना, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो, इट कैन बी human beings, it can be of animal beings, it can be plants. लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बॉडी किस तरह वजूद में आ जाती है? इनिशियल स्टेज उसका क्या होता है? दैट इनिशियल स्टेज इज व्हाट कॉल्ड सेल. Cell is responsible, cell is the only thing that bring life. Okay, that bring life. कोई भी चीज जो एक जिंदगी वजूद में आती है, किससे आती है? जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, दैट इज सेल. सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव लाइफ टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. आजकल आपने देखा कोरोना वायरस, अब you can't see it with your naked eye. So that cell, coronavirus is a single cell. वो एक लाइफ ही है ना. कोरोना वायरस इज अ सिंगल सेल. इसी तरह जो आप हम नेकेड आई से हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, विदाउट यूजिंग एनी लेंस, विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप, दैट आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मोस्ट ऑफ द सेल्स combine to form a body so that we can see it from our eyes, like a human body, like an animal body, like a plant body, that are multicellular organism. So let's start our chapter, then I will clear more concepts related to cells. Okay, so first of all I will clear the title cell to organism. In this chapter we will read all the process that how an organism formed. Okay, from cell to organism, all the process we will read in this chapter, that एक टीनिएस्ट चीज से एक बॉडी किस तरह बन जाती है. सो ह्यूमन लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस. How it came into existence? Just because of the cell. Let's start the chapter, then I will make clear more points. Okay, have you ever wondered how different complex organisms such as elephants, humans, etc. are formed? These are giant bodies. Okay, elephant is a giant body, humans are the giant body, but the question is how it came into being. ये किस तरह से बन जाते हैं? ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन माइंड, आवर माइंड ऑलवेज ऑब्जर्व्स एंड वी ऑलवेज पॉन्डर, वी ऑलवेज वंडर हाउ इट इज पॉसिबल कि एक छोटे से बच्चे से एक ह्यूमन बॉडी प्रॉपर बन जाना किस तरह होते हैं. सो व्हाट बिल्डिंग ब्लॉक आर दे कंपोज्ड ऑफ? What material used in the building? Okay, what material is used in their formation? Allah has created every organism around us with great perfection. Okay, so it is our belief, being a Muslim, being an follower of a particular religion, we always believe that behind every process, behind everything, there is Allah. But अल्लाह ने भी कुछ प्रोसेसेस रखे हैं, अल्लाह ने भी साइंस रखी है एक. तो व्हाट इज दिस साइंस? ठीक है, अल्लाह ताला खुद बोलते हैं कि आप ऑब्जर्व करें, आप जो है वो वंडर करें, आप सोचें चीज़ों पे. ठीक है, सिर्फ ईमान लाना, सिर्फ उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता, हमें खुद भी सोचना चाहिए. सो how is it possible that Allah created everything in its perfect form? Everything around us is made up of many smaller units. So what is the meaning of this line?
everything around us is made up of many smaller unit. We see the grain of sands that are the smallest particle. Okay, हम एक sand का grain ले लेते हैं that we can see from our naked eye, but cell इससे भी टीनिएस्ट होता है, हम उससे अपनी आई से नहीं देख सकते. वी ऑलवेज यूज टू सी सेल फ्रॉम लेंस, फ्रॉम माइक्रोस्कोप. ओके, और कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से नहीं नजर आते. ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक यूज टू बिल्ड अ हाउस. एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक हाउस बनाने के लिए, व्हाट इज द इनिशियल स्टेज, व्हाट इज द इनिशियल स्टेप वी हैव टू फॉलो, दैट इज ब्रिक. एक ब्रिक लगेगी, फिर दूसरी ब्रिक लगेगी, फिर दूसरी ब्रिक लगेगी, देन इट विल फॉर्म अ प्रॉपर हाउस. सिमिलरली, लाइकवाइज, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जैसे एक ब्रिक यूज होता है एक बिल्डिंग को बेस देने के लिए, सेम इज द केस विद द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज सेल इज यूज टू रिक्वायर. सेल वाहिद चीज होती है, सेल इज द इनिशियल स्टेज जो एक बॉडी को, जो एक जान को वजूद में लाती है. ठीक है, एक सेल आएगा, उसके बाद जो है वो सेल जो है वो एक प्रॉपर प्रोसेसेस फॉर्म करेगा, प्रॉपर उसके जो है वो काम होंगे, वर्क्स होंगे, जो फिर आगे एक बॉडी ऑर्गेनाइज होगी स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, ये काम स्टेप बाय स्टेप होता है, बिल्कुल एक साथ ही या विद इन सेकेंड्स नहीं हो जाता ये काम. इट रिक्वायर्स स्टेप्स. सो नेक्स्ट हेडिंग इज सेल. व्हाट सेल एक्चुअली इज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट्स background. The word cell is derived from a Latin word cella. Latin mean लातीनी जबान. So cell जो है वो हमारे पास, how it came into being, how cell came into being, what is the origin of cell, it is derived from a Latin word cella. So what is the meaning of cella? Cella meaning small rooms. Small cells, हमने we always used to say about cell that it is the tiniest particle, you cannot see it with your naked eye. So small rooms, cellas mean small room, that's why the cell is derived from a Latin word cella. A cell is the basic structural and functional unit of life. Two things are very important in this one line: structural and functional. Cell provides structure to the body and cell also provide functions to the body. एक बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर में कैसे आता है? थ्रू सेल. एक सेल कंबाइन हुआ, दूसरा सेल कंबाइन हुआ, तीसरा सेल कंबाइन हुआ, इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर. एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वी बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस. ओके, वी वॉक, वी टॉक, we jump, we cry. What are the basic reason of behind this all these functions? So cell is the basic unit. It is the smallest unit that can support life. We already discussed it. Cell are too small to be observed with naked eye. You will always see cell through third eye, that is lens or a microscope. You cannot see it with naked eye. Microscope is used to observe an enlarged image of these cells. The term cell was first introduced by an English scientist, Robert Hooke. Robert Hooke was the first scientist who introduced the term cell in 1665. He observed plant cell under a microscope and introduced the term cell. So first of all, how he did introduce the cell? How he was able to introduce the term cell? First of all, he studied plant cell under a microscope and then he was able to introduce the term cell. So this was whole for today's lecture. I hope you all have understand it. If you find any question, if you find any confusion, you are more than welcome to ask. Thank you.